Assalamualaikum Daniel and Wade. So I'll just Assalamualaikum. start the one. So I'll just start the tutorial in like 2 or 3 minutes ताकि जिसको भी और आना हो तो आ जाए. जब तक can you confirm के is my screen visible? जहाँ questions मैंने लिखे हैं. They're Yes. visible. And can you also see my journal? It's on my other account. Yeah. ठीक. So I'll just show the questions here and then उसके बाद then I'll switch to that account. I'll unshare the screen and start the question. ठीक है, so I guess I'll start. अभी I'll share screen again. So this is the first question that we're going to go with. इसमें it's mentioning that once again, can you see my screen? Yeah, we can see it. Okay. So the salaries of physicians in a certain specialty are approximately normally distributed. If 25% of these physicians earn less than 180,000 and 25% earn more than 320,000, approximately what fraction earn less than 250,000? And B is asking between 260,000 and 300,000. So the issue in this question is that they haven't mentioned the parameters for the random variable in this case, which is the salaries of the physicians. But they have mentioned two things that for those people who are earning less than $180,000, then there's a 25% chance of you being earning less than 180,000 and a 25% chance that you're earning more than 320,000. So using these two things, we'll come up with the parameters for the random variable, in this case, the salaries for the physicians. And based on that, we will answer these two questions. So I think Suleiman just joined. So I'll just recap a second. So the question is saying that the salaries of physicians in a certain area are approximately normally distributed, and they haven't given us the parameters of the random variable in this case, which is a normally distributed. But they have mentioned that 25% of these physicians earn less than 180,000 and 25% earn more than 320,000. And they're asking us these two specific probability questions. So we don't have the parameters, and without that, we can't solve for these two things. But we do have these two statements using which we can solve for the parameters of the random variable. So I'll just stop share and I'll continue on my journal. So question 1 mentions that, let's say let's denote it by x is normally distributed with parameter mu and sigma square. So now we have the first statement mentions that the probability of earning less than 180,000 is equal to 0.25, right? So I've just written in 180 instead of 180,000 because it's easier to mention it like that. So this is our first statement. And the second statement is stating that the probability of earning more than 320,000 is also 0.25. So based on these, we'll just expand it. So first I'll start with equation number 1. Equation number 1 is saying that probability of x is less than 180
0.25. I'll convert this into a standard normal, which is minusing it by mu and dividing it by sigma, right? And which is equal to 0.25. Do you guys get Yantak? Yeah, do you need me to repeat any part? You can continue. Okay. So once we have this, we know that it's in terms of this, and we want to rearrange this equation such that we have it in terms of mu and sigma. So if you just make the CDF for the normal distribution, it would come out as like this. So it's saying that Z is less than 180 and the probability of 0.25. So then that automatically means that this value, which is 180 minus mu divided by sigma, will lie somewhere towards the left of the zero value, as in it would be negative. And for that reason, it would be it would have a area of 0.25 or a probability of 0.25. So, but as sir mentioned, like given in the probability distribution table, so we have to have it in those terms. Let me show it to you. So we have the table, and the table is in terms of probabilities which are greater than 0.5 and all the way to approximately 1. So we need to convert this 0.25 to something that's larger than 0.5. So one way of doing that is we can just take, because it's symmetrical, so we can take the value, this is 180 minus mu or sigma, and if we take the negative, that is equal to 1 mu minus 180 over sigma, and the probability here by the rules of the normal distribution is also 0.25. But we know that this region, everything towards the left of this part is equal to 0.75. So we can convert this into probability of Z is equal to less than mu minus 180 divided by sigma is equal to 0.75. And then after that, we can apply the function and write it in terms of mu minus 180 divided by sigma is equal to 0.75. And we can take this to the other side to get mu minus 180 divided by sigma is equal to phi inverse of 0.75. So are you all aware of how to get the value for phi inverse 0.75? So Yes. yes, okay. So just in case you don't know, anyone doesn't know, so it's technically that in these values, we look for something that's close to 0.75. We won't be able to get 0.75, but we have to be somewhere close to it. So the only thing here is in this row and towards between these two columns. So it's going to be 0.675 because this is 0.7486. This is 0.717, 7517. So we will be taking 0.675. So based on that, we have this equation. Now on to the second equation. Probability of x is greater than 320 is equal to 0.25. So this is technically saying that probability converting it into standard normal, 320 minus mu divided by sigma is equal to 0.25 is this probability. So this would automatically lie on what region of the normal distribution graph? If anyone could just mention. The right side. Yep, to the right side, because this whole thing is equal to 1. This part is equal to 0.5. Everything towards the right of the 0 is 0.5, and everything towards the left, the area towards the left of the 0 is also 0.5. So this must be this point 320 minus mu divided by sigma would be a positive value.
but once again, we need it in terms of something that's greater than 0.5, because the table that we have, that's only for values that are greater than 0.5. So to do that, we'll just change this to z is less than 320 minus mu divided by sigma is equal to 0.75, because the probability of it being greater than that is 0.25, but the probability of it being less than that, less than this value, is 0.75. So we just convert it in terms of this, get this, and then write it in the capital phi equation. 0.75, 320 minus mu divided by sigma is equal to phi inverse 0.75, which I had calculated earlier. So this is going to be 320 minus mu times sigma 0.675. And now it's pretty simple. I have two equations, two unknowns, so I can just solve simultaneously to get the values for sigma and mu. So I'm not going to go through them because they're pretty simple, but it's 2800 upon 27, and mu is equal to 250. So we get these two values. Now that we do have these two values, we can write the form of the form of the equation in full form: 250 and 2800 over 27. Now what we need is, now what the question is asking in part A is, what is the probability of the salary being less than 250,000? So without solving it, what do you think it would be? Yep, 0.5, exactly. So that's the answer to this. And then in part B, it's asking what's the probability of the salary being between 260,000 and 300,000. So for this, what we do is we take it to this side, 300 minus 260. Because in this step, you would understand that this is 250, this is 260, and this is 300. So if this equation is giving the value for the area for this whole region, and this 260 is giving the area for this region. And if we subtract them both, we would get this particular region, which is what's required in the question. So now we just convert it in terms of standard normal: 300 minus 250 divided by under root 2800 over 27 minus probability of z less than 260 minus 250 divided by 2800 over 27, and just solve these two values and check it up the table to get the exact value for it. Should I move on to the next part, or does anyone need me to explain any part here? I'll take that everyone's understood it properly. This is also a relatively simple question. So suppose that x is a normal random variable with mean 5, and we haven't been given the sigma square, the variance for the random variable, but we've been given that probability x is greater than 9 is equal to 0.2, and the question is asking what's the value for variance of x. So I'll just write it down here. X is a normal random variable with a mean 5 and a sigma square, which is unknown and something that we need to find now.
based on the equation that we've been given, that probability x is greater than 9 is equal to 0.2. So this is pretty easy, so I'll just go over it quickly. So we standardize it as we always do. X greater than 9 minus 5 divided by sigma is equal to 0.2. But the problem is here that we have it in terms of something that's less than 0.5, and the table that we have is for values, probabilities that are greater than 0.5. So we write down the CDF again, and we know it's going to be to the right of the value 0, because that's the only possible point, that's the only possible place where the area could be 0.2. So to just to convert it to something that's greater than 0.2, we will just write it in terms of z is less than 4 over sigma is equal to 0.8. And then after that, all we do is we write capital phi 4 upon sigma is equal to 0.8, and 4 upon sigma is equal to 0.8 phi inverse. And now we look upon the z table to find 0.8. Which is somewhere between these two values. So it would be 0.845. So this would be 4.9 is equal to 0.845, and sigma is equal to 4 upon 0.845. So this is the value of sigma, and sigma square, which is equal to variance of x, which is what the question is asking, because the question is not asking for the standard deviation, it's asking for variance of x. So we just square this, and we get the value for variance of x. All right. Should I move on to the next question? All right. So the next question is mentioning that the lifetime of interactive consumer computer chips produced by a certain semiconductor are normally distributed with parameters mu is equal to 1.4 times 10 to the power 6 and sigma is equal to 3 times 10 to the power 5. What is the approximate probability that in a batch of 100 chips will contain at least 20 whose lifetimes are less than 1.8 times 10 to the power 6? Just copying it down. X is normally distributed with mu 1.5 times 10 to the power 6 and sigma is equal to 3 times 10 to the power 5. So you can square it and then write sigma square. And what this is saying that now we have a batch of 100 chips, and we want to see that whether want the probability that at least 20 of them have a lifetime of less than 1.8 times 10 to the power 6. So how would you go about solving this problem? If anyone could just tell me in this case, in when it's specifically mentioning 100 chips, is this normal or is this binomial or is this some other random variable? So Binomial? yes, exactly, binomial, because it's saying 100 chips and it's saying what's the probability that at least 20 of them are less than this particular value. So for this thing, what we could do, what we just need now, we have one of the parameters, which is n, and we need the other parameter, which is the probability of success. In this case, the probability of success is equal to the lifetime being less than 1.8 times 10 to the power 6. And we have a generic value or something that's not specific to a sample size value. So
based on this parameter, based on this normal distribution, we will find the probability that probability for the lifetime being less than this particular value. And then when we've done that, we will have the parameters for the binomial random variable. So that's what I'm going to do now. So based on that, what I need is probability of x is less than 1.8 times 10 to the power 6. Okay. Acha, has everyone followed me up till here, or do you want me to repeat any part? Oh, thank you. Okay. Probability x is less than 1.8. So as I have always done, I will uh, convert this into a standard normal. 1.8 times 10 to the power 6 minus 10 to the power 5 times 3 divided by 1.4 times 10 to the power 6. So this value comes out to be probability of z is less than 4.3 if you plug in with the calculator. So phi of 4.3, which is equal to approximately equal to 0.9088. And now for the binomial random variable, where we have n is equal to 100, the probability of success is equal to 0.9088. So if I write this down, so it'd be this. But the only issue is that in this question, they're asking at least 20 whose lifetime are less than this particular value. If we were to solve this through binomial, it would be pretty long, because that would mean we'd have to go all the way up to x is equal to 20, x is equal to 21, and up till 100. And even if you go backwards, if we go 1 minus probability of x is less than 20, even then it would be pretty long. So we just approximated to normal, and for approximating it to normal, what we need to have is the value for mu and sigma. And the value for sig mu, as I defined, is equal to n times p, and sigma is equal to n times p times q, or you can write q as 1 minus p. So n times p is equal to 9.088, and this is equal to 8.288. So now we have that. Let's denote this with m because we've used x earlier. M is normally distributed with mu equal to 9.088, and variance is equal to, standard is equal to 8.288 square. So now the question is asking, what's the probability that m is greater than equal to 20? Okay. And converting it to standard normal. So is this correct? If I were to further solve this, would this be correct? Or have I missed out on something? So the mistake that I've made here was that I didn't apply continuity correction, because in this particular question, I had started from a binomial equation. Exactly. So I had started from something that was a binomial, and this is something that's discrete in nature. And we are approximating it using a normal distribution. So what's necessary for us to also do here is that we have to apply the continuity correction here. So in this case, for z greater than equal to 20, we will have to write it in
write it 20 minus 0.5 minus this particular value. It was in 9.08. I actually wrote that it's 90.88. If you multiply 100 by this value, the probability value, then you'd get that. And then NPQ over here too. And then after that, you can just solve it like we've done in the other earlier questions too. And this would come out to be some negative, a really large negative value. And in the graph that I'll just show you, if we have some value that's, for example, greater than this 3.4, we say is like something that's very high. So then in that case, the probability would be approximately equal to 1. So using the same rule, because we're saying it's greater than, in here it's less than. So this would also be approximately equal to 1. So that's how we do question 3. So I'll go on to the second question, the next question. Or do any one of you want me to explain anything? सर एक क्वेश्चन था इसमें, आपने कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए इसके अंदर -0.5 किया है। जी जी। तो उसके लिए क्या है कि हम जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो उसमें माइनस करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू होता है उसमें प्लस करते हैं। ठीक है। इसमें हाँ, जिस तरह सर ने अभी बल्कि नोट्स में सामने है, तो मैं दिखा सकता हूँ। इसमें सर ने ये लिख के दिखाया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हम फिर उसमें से माइनस करते हैं 0.5। इसमें से हमारी ए वैल्यू आप समझ लो वो थी 20 को 0.5 से मैंने डिडक्ट किया तो मेरा आ गया 19.5। तो 19.5 और उसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल करके उसको सॉल्व कर लिया। तो ये है सही से समझ गया से बस। और the next question is also similar to this. So balki, let me go with this question. Measurement errors with a particular instrument are normally distributed with mean 0 and variance 0.5. Find the plus minus range of 90% of all measurements. तो इसको मैं किस तरह करूं आप लोगों के ख्याल में? इसमें it's technically saying कि एक error है, and this is also a random variable and it's normally distributed with mean 0 and 0.5 and variance 0.5, and it's asking for the plus minus range that corresponds to 90% probability. By the plus minus मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि मीन से कितनी ऐसी वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू हो v, जिससे ये 0 से v डिजिट्स आगे गया या 0 से v डिजिट्स पीछे गया, और ये जो पर्टिकुलर एरिया जो है ये होना चाहिए 0.9। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है। तो इसको फिर मैं इन नोटेशंस में किस तरह लिखूं? इसको फिर मैं इसी तरह लिखूंगा कि यही ऊपर जो मैंने लिखा है 0 माइनस v इज लेस देन इक्वल टू e इज लेस देन, बिकॉज मुझे इन दोनों के बिटवीन एरिया चाहिए, 0 प्लस v इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, इसमें ये आ गया प्रोबेबिलिटी नेगेटिव v e जिस तरह नॉर्मली करते हैं इज इक्वल टू 0.9। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया ताकि सॉल्व कर सकूं। नेगेटिव v इज इक्वल टू 0.9 और फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल v minus 0 divided by under root 0.5 minus v minus 0 is equal to 0.9. This is v over under root 0.5
यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रहा है? Yes. ठीक से, ये तो सिंपल हो गया। इसको मैं किस तरह से लिखूं? One minus whole positive quantities. One minus हाँ positive b over under root side. हाँ, परफेक्ट। बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है और हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं, हमें पॉजिटिव वैल्यू के, क्योंकि अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ये 0.5 से कम होगा, तो इसलिए हम इसकी CGF नहीं लगा सकते। बट और इसमें क्योंकि हमारे पास टेबल में वो वैल्यूज मेंशन नहीं है, तो हम इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो हम लेंगे v/0.5, और उसमें से उसकी जो एरिया जो होंगी वो लेंगे। अब हमें पता है कि दिस थिंग, ये एरिया जो है दैट्स इक्वल टू 1 माइनस, इसमें से ये 5 कर देंगे v/0.5, तो देन वी वुड गेट द सेम थिंग, जो ये z इज लेस देन इक्वल टू नेगेटिव v, ये वाली पार्ट आ जाएगी। इस लॉजिक से फिर हमने ये किया 0.5, 0.9 एंड देन 2 of v/0.5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0.1, और इसको फिर हमने सॉल्व करके वो आंसर v के लिए हमने निकाल देंगे से। तो आई थिंक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ये 0.1 के इक्वल होगा या 1.9? सॉरी, ये 1.9 के इक्वल नहीं होगा? ये हाँ 2 1.9 सही कह रहा आप। 1.9/2 एंड इसका 5 इनवर्स हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू जो होगी वो फिर आप टेबल से चेक कर सकते हैं। उनका भी चेक कर लेते हैं। जीरो 0.95, तो यहाँ 0.95 है, इधर आ गई 1.645। So v is equal to 1.645 times under root 0.5, तो v के आपको वैल्यू पता लगी, एंड दिस विल टेल यू कि ये टेक्निकली ये क्वेश्चन जो थी इसको आंसर कर लेंगी कि द प्लस माइनस रेंज ऑफ 90% प्रोबेबिलिटी ये है। और फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पर आता हूँ। अच्छा, या बल्कि ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो अगर आप लोग, मैं अभी एंड कर लेता हूँ और आप बस रीजॉइन कर लेना प्लीज। ठीक है, सो रीजॉइन यूजिंग द सेम लिंक जो मैंने ईमेल में भेजी है। ठीक है। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Question 5 is mentioning that 12% of the population is left-handed. Approximate the probability that there are at least 20 left-handers in a school of 200 students and state your assumptions. तो इसमें से किस तरह करेंगे? कोई ideas?
इसी के सिमिलर काफी सवाल अभी किए थे। फिर इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेंगे और फिर इसको बाइनोमियल को हम लोग नॉर्मल के ऊपर अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। ठीक है, बट इसमें क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किस तरह निकालेंगे? इसमें हमें म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन तो नहीं दिया होगा। हाँ, म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई नहीं है उस क्वेश्चन में। तो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया था कि ये एक नॉर्मल कि मतलब टेक्निकली इस क्वेश्चन में दे हैड गिवन अस कि ये एक वेरिएबल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके बाद हमने उस बेसिस पे ही मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाली थी। बट इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें ना ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि 12% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट देयर आर एटलीस्ट 20 लेफ्ट हैंडर्स इन अ स्कूल ऑफ 200 स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें टेक्निकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ऑटोमेटिकली दे दी है, तो वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास एक उसके दो पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर ये आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज इक्वल टू 0.12, एंड दूसरी जो चीज़ जो थी विच वाज एन का भी हमारे पास ये पैरामीटर आ गया विच इज़ 200, जो इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। और उसके बाद दे आर देन जस्ट आस्किंग कि नाउ यू हैव द पैरामीटर्स फॉर अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। अब वो बस ये कह रहे हैं कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अमंग दोस 200 स्टूडेंट्स, उनमें से क्या चांसेस है कि कम से कम 20 लेफ्ट हैंडर्स हो। तो इसमें भी यही इशू है कि अगर हम इसको बाइनोमियल से ही सॉल्व करें तो वो बहुत लेंदी होगा। तो इसलिए फिर इसी चीज़ को हम बाइनोमियल में अभी जो मॉडल किया था इसको हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे, और जो assumptions जो इसमें जो मेंशन करे कि state your assumptions, those are technically the assumptions for which that are required when you approximate it in terms of normal distribution. तो यही चीज पर मैं भी करता हूँ। सो n is equal to 200, p is equal to 0.12. So x is binomially distributed with 200 and 0.12, and mu is equal to np, which is 24, and sigma is equal to np cube, which is 24 times 1 minus 0.12, जो कि 21.12 हो गया। और अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट x is एटलीस्ट का मतलब ये है कि 20 भी इंक्लूडेड है। तो दैट्स व्हाई मैंने इसमें इक्वालिटी साइन, और स्पेशली जब कन्वर्ट करे हैं फ्रॉम बाइनोमियल टू नॉर्मल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो इक्वालिटी साइन जो होती है कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें कि सही से पता लगे कि इसमें इक्वालिटी आएगी या नहीं आएगी। तो इसके बेसिस पे हम करेंगे। और उसके बाद फिर हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 20 की जो वैल्यू है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं टू अप्रॉक्सीमेट इट टू व्हाट यू कॉल नॉर्मल। और उसके बाद फिर इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इस तरह से होगा। आपकी स्क्रीन शेयर हुई हुई है तो आपका नजर नहीं आ रहा जो आप वर्किंग कर रहे हो। सॉरी, ठीक है, अब नजर आ रहा है जी। ठीक। तो बस यही कि मैंने बाइनोमियल के पैरामीटर्स यहाँ लिख लिए, एंड उसमें से अब हमें अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें तो वी नीड म्यू एंड सिग्मा। म्यू इज इक्वल टू एनपी, जो कि 200 टाइम्स 0.2 इज इक्वल टू 24, एंड सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू एनपी क्यू, which is equal to 200 times 0.2 times 1 minus 0.12, which is equal to 21.2. तो ये आ गया। And initially the question was asking के probability of x greater than equal to 20, उसको मैंने उसमें continuity correction adjust की, तो वो 20 minus 0.5 and then minus the mean value जो 24 मैंने निकाला था divided by variance, तो divided by sigma, तो इसमें sigma square was 21.2, उसको मैंने unroot कर लिया, and then उसके बाद फिर मेरे पास ये आ गई probability of z is greater than equal to negative 0.9792। अब दिस इज जस्ट अ सिंपल वे जो मैं जो CDF जो ड्रॉ करता हूँ
it's just rather than just memorizing all of the formulas के if it's negative and greater than, तो उसमें आप ये apply करते हो, तो this is just an intuitive way to just remember कि इसको किस तरह से आप tackle कर सकते हो. तो ये अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू यहाँ जीरो आ गई, विच इज द मीन वैल्यू इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव 0.972 इस तरफ आती है, एंड इसकी अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसकी एरिया क्या है. तो हम इसको डायरेक्टली टेबल से सॉल्व नहीं कर सकते, तो वी जस्ट टेक इट इन टर्म्स ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू 9792, और इसको हम इस रीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि फर्स्ट इट वाज टू द राइट ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू, और इसी चीज को हम पॉजिटिव कर लें तो इसके लेफ्ट के पर्सपेक्टिव हम देखें, क्योंकि दोनों जो है सिमेट्रिकल है. तो इसमें दिस वुड बी इक्वल टू फाई ऑफ 0.9792, एंड ये फिर आप टेबल से चेक कर सकते हैं कि व्हाट वैल्यू इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू. सो I'll just go to the last question for the day, and can you see my screen? Yes. Oh. So it says if 65% of the population of a large community is in favor of proposed rise in school taxes, approximate the probability that a random sample of 100 people will contain at least 50 people who are in favor of the proposition, between 60 and 70 inclusive who are in favor, and fewer than 75 in favor. तो इसमें से for question 6, यही इट्स प्रीटी सिमिलर टू द क्वेश्चन 5 जो मैंने अभी जो किया था, जिसमें से हमारे पास n जो है n डायरेक्टली मेंशन है इन द क्वेश्चन, ओवर हियर इज 100, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है दैट 0.65, क्योंकि 65% हमें बता रहे हैं कि कितने लोग इन फेवर ऑफ द प्रपोज राइजिंग स्कूल है इन राइजिंग स्कूल टैक्सेस, एंड दिस इज आस्किंग फॉर द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ अ रैंडम सैम्पल. तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा था कि 65% आर नॉट इन फेवर ऑफ प्रपोज्ड राइज इन स्कूल टैक्सेस, देन इस वैल्यू को हम चेंज करके एडजस्ट करके फिर हम उसमें से निकालते हैं. जैसे यहाँ से कि उसको इन दिस ओवर हियर अगर लिखा होता है कि नॉट इन फेवर, तो वी वुड गो विद 1 माइनस 0.65, और उसके टर्म्स में फिर हम ये सारे सॉल्व करते हैं आंसर. तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गई? Yeah, should I re-explain it? Yes, आगे से ठीक है, मैं इसको स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ. X is binomial is distributed with 100, 0.65. इसमें से mu is equal to NP and sigma square is equal to NPQ. 65 and NPQ is equal to 100 times 0.65 times 1 minus 0.65, 22.75. So X is also normally distributed with mean 65 and variance 22.75. अब इसमें से the question is asking के at least 50. अच्छा, जब at least 50 कहते हैं तो समझ जाए कि इसका मतलब ये है कि it's including the 50 value. अगर at least 50 नहीं कहता तो उसका मतलब ये है कि हम इस इक्वालिटी साइन को निकाल देते हैं. और यहाँ जिस तरह मैंने शुरू में मेंशन किया था कि इक्वालिटी साइन इज इम्पॉर्टेंट जब हम बाइनोमियल में कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट इंक्लूड्स एन एक्स्ट्रा टर्म इन इट, और कंटिन्यू नहीं तो फिर आपकी एक मिस्टेक हो जाएगी और आपका आंसर जो होगा दैट वुड बी इनवैलिड. इसमें से कंटिन्यूटी करेक्शन हम एडजस्ट करेंगे फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, जो कि बनती है, हम इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.5 minus it by the mean value and the standard deviation. Probability of Z is
greater than equal to negative 3.24250. Based on this value, आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होगा? टेबल में 3.25. अगर ये फॉर एग्जांपल जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन जो थे उसमें ये लिखा था 24 नेगेटिव 24, तो नेगेटिव 24 के केस में फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है इक्वल टू 1 हो जाती डायरेक्टली, सॉरी 1 हो जाती प्रोबेबिलिटी। हाँ एग्जैक्टली 1 हो जाती क्योंकि इट वुड बी सो मच टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द CDF कि इट वुड टेक इनटू अकाउंट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरिया ऑफ द CDF टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि ये जो है दैट गोज डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो ये पूरी एरिया आ जाती। नेगेटिव 3.25 उसमें मेंशन्ड है और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू जो होगी तो वो मेंशन करेंगे, तो बिकॉज इट्स ग्रेटर देन तो हम इसको 5 कर लेंगे 3.250 एंड इन पार्ट बी इट्स सेइंग के between 60 and 70 इंक्लूसिव। तो इसमें इंक्लूसिव का मेंशन जब कर दिया ना, इंक्लूसिव जब कर दिया तो इसमें से इक्वालिटी की साइन भी आ जाएगी, इक्वालिटी की साइन आ गई और उसके बाद फिर जो कंटिन्यूटी करेक्शन के रूल्स जो है उसी के बेसिस पे एडजस्ट करके हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ 60 minus 0.5 and 70 plus 0.5. तो ये होगा 59.5 70.5 एंड इसी को मैं सेपरेट कर दूं तो ये इस तरह से आ जाएगा। जहाँ तक समझ आ रहा है ठीक है से, एंड यहाँ आई थिंक बियॉन्ड दिस तो इट्स प्रीटी सिंपल, तो वो मुझे करने की ज़रूरत है या आप लोगों को समझ आ जाएगी इसमें? आगे समझ। ठीक है थैंक यू। तो वो आई थिंक दैट्स इट, इतनी क्वेश्चंस हैं मेरे पास। आखिरी क्वेश्चन भी इज क्वाइट सिमिलर टू इट, तो आई डोंट थिंक उसमें इतना फ़ायदा होगा उसको कवर करने के लिए। फ्यूअर देन 75 इन फेवर, मोर लाइक काफ़ी रेपिटेशन होगी इस ट्यूटोरियल में। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है जो या अगर कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो फ्री टू डू सो, otherwise we can end the meeting. Thank you so much. ठीक है, thank you for attending. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.